Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I welcome you all to today's orientation for current affairs in Pakistan Affairs, batch number 8. Let me introduce myself. My name is CSB Allahyar Khan. I have been allocated in Office Management Group and I am from 47 Common. I qualified CSS in my first attempt in 2018. Today, we are going to discuss how to attempt a question in current affairs in Pakistan Affairs, and we will also discuss the changing regional apparatus in South Asia, in the Pacific Ocean, and how the Quad and the AUK-US alliance is giving rise to the China, Russia, and Pakistan axis. We will just discuss some special features of this page, and then we will move towards the question answer session. First of all, that how to attempt a question in current affairs and Pakistan affairs. My dear participants, my dear candidates, this is how we attempt a question in current affairs or Pakistan affairs. I took a question from CSS 1 current affairs, और जो है वहां पे जो है हमें एक क्वेश्चन जो है मिला है वो है कि most of the major political parties have committed to the creation of the new provinces in Pakistan. Should new provinces be created or not in Pakistan? Elaborate your answer by giving references from new provinces debate. Now you are sitting in the examination hall और आप जो है क्वेश्चंस तो सारे आपने क्वेश्चन पेपर में पढ़ लिए, आपने टिक भी कर लिए कि ये जो है ये 4 क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट करने हैं. आप जो है 21 के अटेम्प्ट में बैठे हुए हैं और पहला क्वेश्चन आप ये डिसाइड करते हैं कि करंट अफेयर्स में मैं पहला क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करना चाहता हूं या ये अटेम्प्ट करना चाहती हूं जो पॉलिटिकल पार्टीज पे जो है और जो न्यू प्रोविंसेस पे जो है डिपेंडेंट है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आप जो है अपना पेन को उठाते हुए आप रफ एक जो है एक स्केच बनाएं अपना कि जो है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे किया जाए. तो फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपसे क्या क्या पूछा है. जी सो ब्रेनस्टॉर्मिंग तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो आप लोग जो है सबसे पहले तो टॉपिक को अंडरस्टैंड करें, उसी में आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग आपकी जो है आपकी जाहिर होगी. नंबर 1, इसमें जो है इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए इसके 2-3 पहलू हैं. नंबर 1 पहलू यह है कि भाई आजकल का जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं बहुत कमिटमेंट कर रही हैं कि हम न्यू प्रोविंसेस जो है क्रिएट करेंगे. एक पहलू इसमें ये हो गया. सेकंड पहलू जो है इसमें ये हो गया कि आपसे डिबेट करना चाह रहा है एग्जामिनर कि आप जो है कि जो है शुड न्यू प्रोविंसेस बी क्रिएटेड और नॉट. आपका ओपिनियन मांग रहा है कि आप यस करें फिर रीजंस दें, नो करें फिर भी रीजंस दें. ठीक है. और जो है ये न्यू प्रोविंसेस क्यों नहीं क्रिएट हो पा रहे, क्या मसला है. ठीक है. और जो है अगर प्रोविंस ये न्यू क्रिएट हुए तो उसका क्या फायदा है. ये सारे के सारे पहलू जो हैं ये आपसे ये क्वेश्चन मांगता है. ठीक है. आपसे क्वेश्चन डिमांड करता है कि आपको ये सारे के सारे पहलू आपको एड्रेस करने हैं. सो द फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, and if you have understood the question, the first heading you will be writing in your examination on your answer sheet is the introduction. अब इंट्रोडक्शन जब कैंडिडेट्स लिखते हैं उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और इंट्रोडक्शन 1.5 पेज का 1 पेज का लिख लेते हैं. डियर स्टूडेंट्स, यू आर नॉट अटेम्प्टिंग इंट्रोडक्शन ऑफ एसे. आप लोग जो हैं एक करंट अफेयर्स का या पाकिस्तान अफेयर्स का या किसी कंपल्सरी सब्जेक्ट का आप या ऑप्शनल सब्जेक्ट का आप इंट्रोडक्शन अटेम्प्ट कर रहे हो किसी क्वेश्चन का, तो आप लोगों का जो इंट्रोडक्शन है तो इतना जो इंक्लूसिव होना चाहिए कि बस आप जो चीजें डिस्कस करना जा रहे हैं अपने इसमें क्वेश्चंस में वो चीजें आप में उसमें इंक्लूड होनी चाहिए आपके इंट्रोडक्शन में. सो नॉर्मली जो है आपका जो है इसमें आधा पेज या एक फुल पेज आपके जो है इसमें आ जाता है आपका इसमें इंट्रोडक्शन में, इंक्लूडिंग योर हेडिंग्स, योर हेडिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 एंड यू राइट द मेजर हेडिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. उसके बाद जो है आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग देते हैं तो मतलब आधा पेज तक तकरीबन तो आपका उसमें चला जाता है, आपकी हेडिंग्स में चला जाता है फर्स्ट आपके इंट्रोडक्शन समेत. ठीक है. तो मतलब आधा पेज, ठीक है, आधा से ज्यादा मतलब इतना आपका जो है ये इंट्रोडक्शन की आपकी हेड आपके जो है ये स्टफ आ जाता है इसमें. ठीक है. उसमें जो है आप की आर्गुमेंट्स अपने इंट्रोडक्शन में लिखें.
लेकिन की और अपने इंट्रोडक्शन को एड्रेस करने से पहले अगर आपके पास कोई ऐसी कोटेशन है, अगर आपके पास कोई ऐसी बुक है, तो आप उसी बुक के साथ, उसी कोटेशन के साथ उसको इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करें, ब्लैक पेन उठाकर, ठीक है, उस कोड को रेफर करें, उस बुक को रेफर करेंगे। इस बुक में फलां ऑथर ने ये कहा है पाकिस्तान के न्यू प्रोविंसेस के लिए, या पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स के लिए, पाकिस्तान के जो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के लिए, जो भी आपको बुक मिले जो है आप वहां पर स्टार्टिंग में कोड कर लीजिएगा। इट विल गिव गुड एक्सपोजर ऑफ योर अटेम्प्टिंग आंसर टू द एग्जामिनर। ठीक है, उसके बाद जो है की आर्ग्यूमेंट्स अपने इंट्रोडक्शन में डाल के, ठीक है, अपने इंट्रोडक्शन को खत्म करके उसके बाद फौरन आप आएंगे, पहली सेकंड हेडिंग आप ये डालेंगे कि जो है आप आउटलाइन दे सकते हैं। बाकी जो है आपका काइंडली आप लोग जो है मुझे क्वेश्चंस जो है एंड में करें। प्लीज आस्क मी द क्वेश्चन एट द एंड ऑफ दिस सेशन। आप लोगों अब मैंने अपॉर्चुनिटी दी हुई है, यू हैव टू आस्क मी द क्वेश्चन एट द एंड। ठीक है, सो उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखने के फौरन बाद आप लोगों को क्वेश्चन एड्रेस करना है। जो आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, जो आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया, तो आपने एक प्रायोरिटी बना ली होगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या डिस्कस करना है। क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए आपको सबसे पहले ये पूछा गया है कि मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जो है उन्होंने कमिटमेंट की है कि जो है अपना न्यू प्रोविंसेस क्रिएट करने की। तो सबसे पहले तो आप उस पहलू को एड्रेस करेंगे कि व्हाई पॉलिटिकल पार्टीज कमिट टू द क्रिएशन ऑफ द न्यू प्रोविंसेस एंड ऑन व्हाट बेसिस। तो जो हमारी तो उसमें आप रीजंस देंगे। सबसे पहले जो है आप बताएंगे कि ग्रोइंग पॉपुलेशन at the birth of Pakistan in the 1950s, there was a population of 30 million and 32 million, and now it has exceeded, as per the 2017 census, 207 million, excluding the population of GB and Azad Jammu and Kashmir. So the growing population have given rise to more governance issues and more administrative issues. That's why there is the need of the creation of new provinces. And this, you have to express your statistics, you have to express your data and research in the shape of you can say graphs। जिस तरीके से फ्री हैंड मैंने ये एक ग्राफ शो किया है, ठीक है, इसी तरीके से जो है आप जो है एक्स एक्सेस पे, वाई एक्सेस पे जो है आप जो है एक्स एक्सेस पे अपना जो है पॉपुलेशन लिखेंगे मिलियंस में, और जो है वाई एक्सेस में आप ईयर्स लिखेंगे, किस ईयर में पाकिस्तान पॉपुलेशन किस बेसिस पर थी। तो आप जब ये अपना ये स्टेटस शो करेंगे, डेटा शो करेंगे इन द शेप ऑफ योर ग्राफ्स, इन द शेप ऑफ योर पाई चार्ट्स, ठीक है, तो दिस विल sell your hard work to the examiner. This will also show that how much you have prepared for these CSS exams. तो examiner आपको मार्क्स देता है, जो चीजें आप लोग जो शो करते हैं इन द शेप ऑफ प्रेजेंटेशन, एग्जामिनर आपको मार्क्स देता है। यही जो है आपका जो इसमें आप पाई चार्ट्स में भी शो कर सकते हैं। जैसे पाई चार्ट्स में पाकिस्तान की जो है मेल और फीमेल पॉपुलेशन जो है, अगर हम ये शो करना चाहें तो, या अगर हम जो है डिफरेंट प्रोविंसेस का जो है हम लोग जो है अपना ये शो करना चाहेंगे पॉपुलेशन कितनी है, तो हम लोग जो है ये पाई चार्ट्स में भी हम लोग शो कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो है ये अपना आपका ऑलमोस्ट जो है 50% जो है, मोर देन 50% जो है पंजाब की पॉपुलेशन है। उसके बाद जो है ऑलमोस्ट जो आपकी इसमें आपकी पॉपुलेशन जो है 110 मिलियन जो है आपकी, इसकी जो है ना 110 मिलियन आपकी आबादी जो है पंजाब की है, एज पर द 17 सेंसस। ठीक है, और जो है आपकी 47 मिलियन जो है आपकी सिंध की है, उसके बाद जो है आपकी बलूचिस्तान की पॉपुलेशन आ जाती है, उसके बाद केपीके की, और जो है आप इसमें इस्लामाबाद की पॉपुलेशन कर लें। इस तरीके से जो है आप लोग जो है पाई चार्ट्स पे भी आप अपने डेटा को शो कर सकते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो जो है इसके बाद जो है डेटा को जो है शो करते हुए आप लोग जो है क्वेश्चन को एड्रेस करते जाएंगे। इन द नेक्स्ट in addressing the question that why political parties have committed to the creation of new provinces, and while giving the reasons, the second reason you will give that if they are the big administrative units. Like if you look at the map, अब मैप की नजर आपकी नीड पड़ गई, ठीक है, तो मैप आप ड्रॉ करेंगे फ्री हैंड। ये तो मैंने फ्री हैंड ड्रॉ की है, एक्यूरेट मैप आप जो है ड्रॉ नहीं कर पाएंगे।
ठीक है। तो जो है आप लोग जो है फ्री हैंड अपना मैप बना लें, कोशिश करें कि अच्छी से अच्छी मैप, अच्छा से अच्छा मैप बने। उसके बाद जो है आप डिफरेंट रीजन्स को शो करेंगे। आप यहाँ पर भी जो है पंजाब की पॉपुलेशन, सिंध की पॉपुलेशन, बलूचिस्तान की पॉपुलेशन, केपीके की, जीबी की, एजेके की, आप ये जो है शो कर सकते हैं यहाँ पर मैप में। ठीक है। आप जो है इसमें बताएंगे इस पैराग्राफ में कि जो है कि दीज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, दीज लाइक सिंध, पंजाब, केपीके, बलूचिस्तान आर कंट्रीज विद इन द कंट्री। किसी भी किसी भी आपके उसमें प्रोविंस की पॉपुलेशन जो है इट डज नॉट एक्सीड मोर देन 25% ऑफ द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है। तो पंजाब को अगर 1 in 10 million की पॉपुलेशन उसकी, अगर इसको एक एज अ मुल्क कंसीडर किया जाए, इट विल बी द 12th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। So this has created the administrative issues. जो रंगिया खान के जो लोग हैं, they find it easier to visit Sindh and address their problems. जो बलूचिस्तान के हब के लोग हैं, जो यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, जो हब के यहाँ पर जो हब चौकी के हैं, they find it convenient to resolve their problems while visiting Karachi. जो पंजाब के जो अपर एरियाज के, जो नॉर्दर्न पंजाब के एरियाज के जो लोग हैं, दे फाइंड इट कन्वीनियंट टू विजिट इस्लामाबाद एंड एड्रेस देयर ग्रीवेंसेस। सो केपीके के जो जीबीके के जो मतलब यहाँ के जो हैं नॉर्दर्न के जो इसमें केपीके के जो नॉर्थ के जो है इसके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दे फाइंड इट कन्वीनियंट टू विजिट इस्लामाबाद एंड एड्रेस देयर ग्रीवेंसेस। और जो है मींस प्रोविंशियल कैपिटल्स, जो आपके कराची है, जैसे कराची यहाँ पर है, ठीक है, कराची यहाँ पर है, तो कश्मीर के जो हैं दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू एड्रेस द ग्रीवेंसेस एंड प्रॉब्लम्स बाय विजिटिंग कराची। और जो रहीमिया खान के लोग हैं, दे फाइंड इट हार्डर टू विजिट लाहौर एंड एड्रेस द ग्रीवेंसेस। जो बलूचिस्तान के जो लोग हैं, जैसे गवादर के लोग हैं, जो दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू विजिट कोयटा एंड कवर द डिस्टेंस ऑफ almost 800-700 kilometers and address the grievances। और यही जो है आपके जो है का इसमें ये जो फट एजेंसीज हैं, और दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू विजिट पेशावर एंड एड्रेस द ग्रीवेंसेस। सो बिग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है। एंड देन you and then you will also highlight, you will also give the reasons कि जो है like there is the unequal distribution of resources and then there has been over centralization. There was the one unit system from 1955. There is a poor management of resources, and this has given rise to endless sentiments. And despite the passage of the 18th Amendment, there is the no any local insurance of local government, and this has given rise to the creation of the new provinces. And this that is why political parties are committed to the creation of new provinces. And then by addressing the different domains of this question, you will move towards the next, that why, despite these over demands, despite these authentic demands, why the political parties have failed to create new provinces. And then you will mention that जो है political parties have failed to create new provinces despite their repeated commitments to the different regions. उसका मकसद ये है कि उनका मकसद यही रहा है कि टू एड्रेस द पैरिशल इंटरेस्ट, कि मतलब उन्होंने इथनिक बेसिस पे उसको हिट किया है कि हम जो है सराइकी प्रोविंस क्रिएट करेंगे, हम जो है हजारा प्रोविंस क्रिएट करेंगे, हम जो है मुहाजिर प्रोविंस क्रिएट करेंगे, हम जो है एक अपना इसमें साउथ पंजाब या सेंट्रल पंजाब या नॉर्थ पंजाब का एक डिफरेंट प्रोविंसेस क्रिएट करेंगे। मतलब ये है कि प्रोविंशियल इंटरेस्ट है, इतनी बेसिस पे उन्होंने एड्रेस किया है। दैट्स व्हाई वी हैव फेल्ड टू क्रिएट न्यू प्रोविंसेस। एंड नाउ you will move towards that, addressing the question का जो सेकंड पार्ट है कि should new provinces be created or not। अब यहाँ पर जो है you will agree with the question or not। ठीक है। अगर आप एग्री करते हैं कि न्यू प्रोविंस शुड बी क्रिएटेड, आप रीजंस देंगे। अगर आप कहते हैं कि न्यू प्रोविंस शुड नॉट बी क्रिएटेड, फिर भी आप रीजंस देंगे। अगर आपको मार्क्स लेने हैं तो मोस्टली आप लोग जो है इस बात से एग्री करेंगे कि न्यू प्रोविंस शुड बी क्रिएटेड। उसके बाद आप उसके रीजंस देंगे कि भाई कि जो नेशंस दैट आर अलाइव टू द चेंजिंग सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, they create new provinces, such as USA, such as UK, such as India. So they have created new provinces and they have ensured socio-economic development. And then for administrative efficiency, new provinces are needed of the hour. And then you will also discuss that smaller provinces strengthen national unity and federation. And they will also ensure quick development, better generation of resources, and so on. And you will also
address the political impact on Balochistan. That if a province is created in Balochistan, that which challenges will it create? वहां पर पश्तून पॉपुलेशन जो है नॉर्दर्न पंजाब नॉर्दर्न बलूचिस्तान में ज्यादा है, ठीक है। साउथ में आपके मकरान कोस्टल बेल्ट है, दे हैव डिफरेंट इथनिक बैकग्राउंड एज कंपेयर टू द सेंट्रल बलूचिस्तान who are purely Baloch people, ठीक है। So there will be the different ethnic challenges when it comes to the creation of new province in Balochistan. लेकिन उसकी आबादी बहुत कम है, it consists of 43% of Pakistan area. So different complexities को देख के जो है हमें जो है बलूचिस्तान के प्रॉब्लम को भी एड्रेस करना चाहिए, ठीक है। एंड देन at the last heading, second last heading, you will give the critical analysis. क्रिटिकल एनालिसिस में आप डिस्क्राइब करेंगे कि भाई कि ये चैलेंज क्यों नहीं जो है, ये जो द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोमिस इज नॉट अ न्यू डिबेट, इट हैज बीन डिस्कस्ड फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान 1947 से लेकर आज तक ये जो है न्यू प्रोमिस डिबेट चलती आ रही, ठीक है। सो इस डिबेट को जो है सही तरीके से एड्रेस नहीं कर पाए, क्योंकि जो है इतने चैलेंजेस और जो है पर्सनल इंटरेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज के हैं टू बिल्ड अप देयर वोट बैंक instead of addressing the real challenges. So critical analysis में आप ये डालेंगे, so हमें जो है administrative basis पे जो है हमें promises new create करने चाहिए in order to strengthen national unity and to create quick development and better generation of new resources. And then आप conclude करेंगे 3-4 lines में. This is how a question is addressed in current affairs in Pakistan affairs. And then we will move towards the next topic, that the changing regional apparatus, how Quad, AUKUS are giving rise to China, Russia, Pakistan axis. Before going to the axis, discussing axis, China, Russia, Pakistan axis, we must discuss that how India's tilt towards USA has created this axis. Number one, first of all, USA made agreement with India. India went towards the USA umbrella in 2002. This is the General Security of Military Information Agreement. 2002 में इन्होंने डिसाइड किया कि हम जो आपस में क्रिटिकल मिलिट्री इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, it will not be shared with the third party. Second is the US-India Civil Nuclear Deal. 2008 में कांग्रेस ने अप्रूव की थी, जिसमें जो है थ्रेट ये था चाइना को, पाकिस्तान को, कि ये जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में जो है इसमें वेवर डाल के न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में जो इसको इंडिया को ऐड किया जा रहा है, इंडिया इसी को सिविल न्यूक्लियर को जो है यूज करते हुए मिलिट्री पर्पस के लिए इसको यूज करेगी, अपने जो है न्यूक्लियर वॉरहेड्स को जो है मल्टीप्लाई करेगी. So this gave another challenge to Pakistan and China as well as Russia to find a safe refuge in the shape of the Axis. And then USA designated India in 2016 as a major defense partner. So it will treat India like it treats its allies, its NATO allies. And then it made another agreement with India, logistic exchange memorandum agreement. तो ये जो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मतलब ये आपस के जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो उसको रिपेयर करने के लिए एक दूसरे के एयरबेसेस यूज करेंगे. अगर जो है कि किसी एयरक्राफ्ट का जंग के दौरान, ठीक है, उसका जो है ऑयल सप्लाईज कम हो जाते हैं, तो वो यूएसए के कोई भी एयरक्राफ्ट इंडिया के एयरबेसेस पे लैंड करके अपना जो है रिपेयर भी करा सकते हैं, उनको अपने ऑयल सप्लाईज को रिप्लेनिश भी करा सकते हैं. इन द सेम वे इंडिया भी यूएस की मिलिट्री बेसेस को यूज कर सकता है. ठीक है. एंड देन 2018 में जो है यूएसए मेड एग्रीमेंट विद इंडिया, दैट इज अ कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट. यही वही जो है आपस में जो है सिक्योरिटी पैक्ट्स, सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स, मिलिट्री इक्विपमेंट्स आपस में शेयर करेंगे और जो है मिलिट्री टेक्नोलॉजी को आपस में जो है शेयर करेंगे. एंड इट विल आल्सो बी सिक्योर्ड एंड विल नॉट बी शेयर्ड विद द थर्ड पार्टी. एंड रिसेंटली 2020 में जो है सितंबर 27 2020 को जो है बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट, इन विच इट वाज एग्रीड दैट कि जो है सैटेलाइट डेटा को आपस में जो है शेयर करेंगे, सैटेलाइट को यूज करते हुए अपनी कॉमन एनिमी लाइक चाइना, पाकिस्तान और जो है रशिया, उसको जो सैटेलाइट डेटा को जो है अफगानिस्तान को, सेंट्रल एशियन स्टेट्स को जो है ऑब्जर्व किया जाएगा.
and they will also strengthen their security agreement and as well as their air force, military, and navy cooperation. Due to these agreements, due to growing India's pull towards USA, this has given Pakistan to found refuge in China and Russia and make the access. Secondly, there is a role of power and AUK US in strengthening in axis, this three axis. USA as well as India, Australia, Japan, as well as New Zealand, they have come to the single platform to challenge China on the basis of maintaining the current capitalist order, on the basis of freedom of navigation, and in order to challenge China's Belt and Road Initiative. You can also see that कि ये जो Belt and Road Initiative की जो first conference थी 2017 में इंडिया ने इसको बाइकआउट किया था और रिसेंटली इसी साल जो है सितंबर में AUK US ऑस्ट्रेलिया UK एंड USA की जो है ये रिसेंट डील हुई थी in which this was the most significant security arrangement between the three nations since the World War II. Besides Five Eyes, intelligence of Five Eyes, ये जो है इन्होंने जो है they will strengthen their cyber capabilities and undersea technologies in order to contain China, in order to suppress the exports of China. And then we will also discuss that how this axis came into being. Tomorrow in the class at 1 p.m. I will discuss that how this axis came into being, how Beijing and Russia relations were cemented, and then how Beijing and Pakistan relations were made, and then it gave rise to the axis, and how Russia and Pakistan have come to the single platform, and they have ultimately given rise to the China-Russia-Pakistan axis. I will also discuss the reasons tomorrow in the class at 1 p.m. This is the features of this batch. There are the more than 50 plus topics in this current affairs, Pakistan affairs batch that include current affairs, current topics, as well as the post-partition topics. There are 12 lectures, and we will have classes on Saturday and Sunday from 1 p.m. to 3 p.m. I will share with you the slides, current slides with current up-to-date material in the shape of the slides. I will also share you the up-to-date material. There is the real guidance, face-to-face as on the virtual alliance, virtual guidance, and then I will also give you the techniques on making notes, attempting question answers, and I will also share with you in the group the latest developments. Regular classes will be held from tomorrow, Sunday, November 7, 1 p.m. कल से classes आपकी start होंगी. If you want to register yourself, this is the fees and this is the account details. And now you can ask me the question.